Hi everybody, a very good evening to each and every one of you. So today we will be studying some very important aspects of Hindu Marriage Act, and especially we will be studying about grounds for divorce. So this will be an overview of the grounds for divorce. And in case you need a very detailed lecture, you can mail me your queries at yourlegalbuddy09@gmail.com. I provide online and offline both types of lectures. So anyways, coming back to the lectures, ground for divorce. Take very important. First ground is adultery. Take now, before 1976, the stand of various courts in India was if you are continuously living in adultery, that is, you have been doing continuous cohabitation, then this will be a ground for adultery. Now, after 1976, we see that the ground is even if once you have sexual intercourse, then it would be sufficient. Now, what exactly is adultery? A lot of people don't know. Now, today we will be clearing all the concepts of adultery. Adultery exactly is consensual and voluntary sex between a married man and a person other than a spouse. ठीक है, read this again. A consensual, पहली बात consensual होना चाहिए. Voluntary मतलब both the parties have engaged. ये दो बात कंफर्म हो गई. ठीक है, तो यहाँ पे दो both the part, who are the two parties in adultery? First party is a married person and a second party is a person other than the spouse. ठीक, this ये हो गया adultery. ठीक. नाउ अब एक केस ये देखा जाता है कि अडल्ट्री करी बट पीपल से दैट वी वर इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन एंड देन अडल्ट्री हैपेंड. मैंने शराब पी ली थी, उस वजह से अडल्ट्री मैंने कर बैठी. नो, व्हाट क्वेश्चन द कोर्ट विल आस्क इज कि आपने जो शराब पी वाज दैट इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन और वाज इट वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन? आपने खुद जाम बनाया और शराब पी, या आपको धोखे से किसी ड्रिंक मिला के पिला दी गई थी एंड यू डिडंट इवन गेट टू नो that you have consumed alcohol. तो अगर if that was voluntary, then this is a ground for divorce. If it's not voluntary, then it's not a ground for divorce. ठीक है. Now adultery under section 497 of IPC, this is a very important topic. Now let us say in Joseph Shine versus Union of India. क्या केस मैंने बोला? Joseph Shine versus Union of India. इसमें कहा गया था this section has been struck down by Supreme Court. Section 497. It has been struck down by Supreme Court, accepting that it is manifestly arbitrary and thus violative of Article 14 of Constitution of India. This provision used to treat women as a property of husband. ठीक, लेकिन but still this is a ground for divorce. Adultery is not more it's no more a crime. ठीक है, you cannot file an FIR in the instances of adultery, but इसमें एक आप ground for divorce is still there. When a petition is filed for matrimonial relief of judicial separation on ground of adultery, the main relief is sought against the spouse and not the adulteress who has committed adultery. जो spouse है उसके against relief sought करी जाती है. ठीक है ना? If adulterer is known, he she becomes a necessary party to the proceeding and must be made to correspondent. ठीक है. अब सेक्शन डॉक्ट्रिन ऑफ रिक्रिमिनेशन एक है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. दैट सेज इफ बोथ द पार्टीज आर गिल्टी ऑफ कमिटिंग अडल्ट्री, अगर दोनों पार्टी ने अडल्ट्री कमिट करी है and one of them approaches to take the decree of divorce on the ground of adultery, then in such case court will not grant a decree of divorce as a one party who has approached the court has not come in clean hands. अगर both the parties have been in adulterous relationship with different people, and one of them approaches court to grant divorce on the ground of adultery, then the court will not grant divorce on the basis of adultery because uh, court will say that you have not come with clean hands. आपने खुद जब ये गलती करी है, and you cannot ask court to help you in getting divorce from that particular person. ठीक है. This is violation of section. This is violation of 23(1)(r), where petition must not be allowed to take advantage of his or her wrong. ठीक है. It is an established rule. Remember this. It is an established rule that criminal law where applied, जहाँ भी criminal law apply हो रहा है, must have a very high level of standard of proof. This is called beyond reasonable doubt. But that not in the case of civil law where standard of proof is very lower. अब ये कह रहा है कि अब all in all it is saying is कि अगर both the parties have been involved in adultery और उसके बाद वो दोनों कोर्ट आते हैं adultery के ग्राउंड पे डिवोर्स देने के लिए, then divorce won't be granted.
ऑक्सफोर्ड वर्सेस ऑक्सफोर्ड का एक केस है, वेरी इंपॉर्टेंट केस, आई थिंक इसका रिलेवेंस आगे बढ़ेगा. इट सेड वाइफ गेटिंग प्रेग्नेंट बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और एनी अदर साइंटिफिक मेथड विल नॉट बी अमाउंट टू कमिटिंग एज अडल्ट्री. ठीक है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड ग्राउंड फॉर डिवोर्स. वी सी डेली some of the other high court has come on this particular point कि cruelty आखिर है क्या. This is a very subjective term, depends on the facts and circumstances of the case. Cruelty क्या है? First of all, it is very difficult to determine. Now, in case you have joined now, मैंने बता हम we were discussing what are the grounds of divorce. पहला ground adultery, second ground is cruelty. Very difficult to define what exactly is cruelty. Cruelty to me might not mean cruelty to you. ठीक है. In Russell versus Russell कहा गया था conduct of such a character as to have such danger to life, limb or health, body health. ठीक है. So as to give reasonable apprehension to such danger. ठीक है. अगर आपको life, limb या bodily health का कोई danger आ रहा है then this is definitely cruelty. ठीक है. Now what is the aspect of intention in this cruelty? ठीक. Very important. It is a desire to produce a particular consequence with certainty. Now, in cruelty, intention does not matter. Without intention, your actions are causing cruelty to your partner. This is a valid ground for divorce. Divorce मिलेगा इस पे. ठीक है. You cannot take this ground की intention नहीं था मेरा cruelty करने का. ठीक है. नवीन कोहली versus नीतू कोहली, very important case. It says held intention to be cruel is not an essential element. This is a very important judgment. If you are writing mains of any state DJS, state judicial services examination, do write this down. ठीक है ना. नवीन कोहली versus नीलू कोहली. The court held that for cruelty two things need to be established: nature and conduct of respondent and the impact on the petitioner. ठीक है. Both the things have to be established. ठीक. Now now let us see what are some instances of cruelty. It says false accusation of adultery or unchastity is a instance of cruelty. If you are raising finger on the character of a woman, if you're character of a wife, then this is a ground for cruelty. Demand for dowry, very big ground for cruelty. 90% of the cases that are pending in the family courts is on this sole ground. डिमांड फॉर डाउरी. इसका शोभा रानी वर्सेस मधुकर रेड्डी लैंडमार्क केस. ठीक. ड्रंकननेस, अल्कोहल अगर if husband or wife either party is drinking alcohol or taking alcohol or not, very good ground for cruelty. And threat to commit suicide, if you say कि ये काम करो otherwise I will jump from 5th floor, 6th floor or 2nd floor, or I will eat some sort of medicine and I'll die, this is a very good ground for cruelty. ठीक है ना. वर्बल अब्यूज एंड इंसल्ट टू स्पाउस पेरेंट्स. ठीक है. गाली देना. ठीक है. या चिल्ला के बात करना और टॉकिंग बैड थिंग्स अबाउट वाइफ्स और हस्बैंड्स पेरेंट्स, दिस इज अ ग्राउंड फॉर क्रुएल्टी. वाइफ राइटिंग फॉल्स कंप्लेंट टू द एम्प्लॉयर ऑफ हस्बैंड, वेरी पिक्यूलियर बट वेरी गुड ग्राउंड की जहां पे क्रुएल्टी कहा जाता है. ट्रू एज एंड प्रीवियस मैरिटल स्टेटस हाइड कर रहे हैं, दिस इज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स. वाइफ टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी विदाउट हस्बैंड्स कंसेंट, वेरी इंपॉर्टेंट केस. ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट केस फॉर क्रुएल्टी. ठीक. अब नॉट अ क्रुएल्टी क्या है? क्रुएल्टी क्या चीज नहीं दी गई थी? वाइफ्स रिफ्यूजल टू रिजाइन फ्रॉम ग्राउंड, गुड ग्राउंड फॉर नॉट ग्रांटिंग डिवोर्स. इट वाज कंसिडर्ड एज नॉट क्रुअल. ठीक. वाइफ quarreling with mother in law, not cruel. Imagine this is not cruel. I feel this should have been very cruel. This should have been counted under mental cruelty. ठीक है. अब डिफेंसेस टू क्रुएल्टी क्या लगा सकते हैं? ठीक है. डिफेंसेस टू क्रुएल्टी की क्रुएल्टी अगर एलिज करा गया आपके अगेंस्ट, एंड व्हाट आर द डिफेंसेस दैट यू कैन पुट फॉरवर्ड इन द कोर्ट. फर्स्ट इज प्रोवोकेशन. ठीक है. इफ यू हैव बीन प्रोवोक्ड बाय योर वाइफ और बाय योर हस्बैंड, उसके बाद आपने कुछ एक्शन ले लिया जिसके अगेंस्ट वो क्रुएल्टी में डिवोर्स करने चली गई, प्रोवोकेशन इज वन सच ग्राउंड. अनदर ग्राउंड इज सेल्फ डिफेंस. ठीक है. इफ यू आर टेकिंग एनी सेल्फ डिफेंस एक्टिविटीज, आप कुछ सेल्फ डिफेंस में कोई चीज करते हैं एंड इट इज कॉजिंग क्रुएल्टी टू द ऑपोजिट सेक्स, टू द ऑपोजिट पार्टी, दिस इज अ वैलिड ग्राउंड. ठीक है. 20 सेक्शन 23(1)(b) में कहा गया है कि अगर क्रुएल्टी आप जब चाहे अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड को कंडोन कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट कोहैबिटिंग, यू कैन स्टार्ट लिविंग टुगेदर. ठीक है. अब ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थी. ठीक है.
नाउ हम लोग अगले वीडियो में दास्ताने वर्सेस दास्ताने पढ़ेंगे क्या था, या कैसा करते हैं, आज सूरत दास्ताने वर्सेस दास्ताने कवर करते हैं. It says generally it happens that a spouse who doesn't care for the feelings and happiness of the other spouse meant to injure the other spouse. It is the cumulative behavior that makes it cruel. ठीक है, अब एक cumulative behavior होता है. You cannot point one particular instance or one particular activity that is causing cruelty to your husband or your wife. You have to make a trail कि ये करा ये करा ये करा. You have to make series of activities that are causing cruelty to the husband. ठीक है ना. ये क्यूमुलेटिव एफर्ट्स होते हैं, क्यूमुलेटिव एक्ट्स होते हैं दैट कॉजेज क्रुएल्टी. ठीक. सेक्शन 23(1)(b) क्या कहता है? 23(1)(b) हम लोग पहले यहाँ से देखते हैं क्या कहता है. व्हाट डज सेक्शन 23(1)(b) सेज? इट सेज 23(1)(b) इट सेज where the ground of the petition is, yeah, 23(1)(b), yes correct, 1b. कह रहा है कि in any proceeding under this act whether defended or not, if the court is satisfied, whether defended or not, if the court is satisfied that where the ground for the petition, where the ground of the petition is the ground specified in clause 1 of subsection 1 of section 13, the petitioner has not in any manner been accessory to or convinced to at the condone. अब वो कह रहा है कि अगर आपने 13(1) में कोई ग्राउंड ले रखा है जो कि डिवोर्स ग्राउंड्स है, उसको आप कंडोन कर सकते हैं एंड यू कैन मूव फॉरवर्ड ऑफ कोहबिटिंग. ठीक है, दिस इज ऑल सेक्शन 23(1)(b) says. ठीक है. Now, from the next video, we'll see about some various other case laws. So it has been a very good lecture, I feel, and very concise lecture. आपको इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा. And thank you for watching, and have a good day forward. Thank you.